will be delivering a lecture on his so-called startup. Uh, Actually, Pranav needs no introduction, frankly speaking. If you go and Google it, you will find a lot of information about him, especially related to the startup, the way he has developed the startup. And you know my so-called title, where I say that engineer your research for the startup. The Dr. Pranav perfectly fits in that. He has finished his PhD from here, and he learned about the research techniques and the research methodology and all that together during his PhD. Finally entered into the startup. Uh, I should say, at the earliest opportunity, he has tapped it and he has started his company, Lucid Implants, working in a biomedical devices sector, as we have already seen with what Professor Hakan has said, that we need to focus more and more towards the medical device innovation. So Pranav has rightly entered into that field at the right time. And it is not only the starting the company, but as I already told you in my lecture, it is the scaling also. So he is scaling every now and then. I think I have interviewed him in the engineers research for startup. Pranav, is it okay? That I interviewed also that time, and I just asked him like, what is in your wish list after 20 years, 15 years, and all that. So he said rightly that I wish that my company should be listed on a stock exchange, and hopefully everybody is trying to grab his shares. They should play with his shares and earn more and more profit through the shares. That shows the success of the industry. I don't know how many of you are aware about the stock exchange, but then they say that the some first 50 industries control the Sensex up and down. What is their status? That first 50 industries, that is what they look at. And then that in that first 50 or that 50 industries, some industries, they come, they just leave that one and all that. So you have to always see that your industry is always there. That means it is what they call as the premium industry, where everybody would like to take the share of that company. So Pranav has said that time, I hope in 2021, hope he's on the same path, and will likely to take his shares soon to the public limited company. Okay, so now platform is open for Pranav, and Pranav, please proceed. Thank you. You do it like this? No, but this is more comfortable. You need not. You can. Your hands are free there. Huh? Yes, Okay. Yeah, take it. Okay, so today we'll be discussing mostly about the application part from the biomedical engineering. It has so many aspects inside that, but mostly I'll be covering mostly the application part, means what happens in the industry, or how if suppose you are doing research in any area, then how you can generate a product of that area, and then how you can sell in the market. So, from the industry perspective, you please understand that every time what happens is new products which are coming into the market are generally developed in the West, and what as Indians or like in developing countries, they try to copy their technology, and then they sell it at a local level. But as you see in the medical devices area, industries or countries like Germany and the US have the dominance actually. So they develop the technology. So the first printer also is developed in that, and then so it is also always called as the research is done by sitting on the shoulder of the giants. Shoulder of the giants means if they have not generated a 3D printer, I could not have done the business. Okay. So when they do something, then we use their thing and then we make our products with that. So initiation is the key to the business, is that when we develop any technology, how other people are using that technology to exploit it into their local
So local for vocal is what is make in India is actually when we import anything from outside, you have to pay a huge custom duty, and then this is how those countries gets benefited when we pay them extra. Also, that is called as a lock-in. Lock-in means if suppose we have a printer which is very expensive and the parts are also not available in India. Lock-in means every time you want to do the production, you import their parts. So anyways, they will be always on the higher level than us. So in tier 2 and tier 3 cities, mostly you see nowadays that in every family, one kid goes to some of the 2-3 cities that I can tell you is like Pune they shift, or Mumbai they shift, or Bangalore they shift, or out of India they shift. Why this happens? Because the industries are in those places. But democratization of the technology is also important. What I mean by that is you should have class 5 technology in tier 2 and tier 3 cities also, so that the intellectual knowledge doesn't go everywhere and saturate the tier 1 cities. Is that fine? So what is the solution to that is, if suppose small startups also having a revenue of 2 crores, 3 crores or 5 crores can deploy or employ at least 20 people in their local city, the cumulative GDP of the country increases very much. Rather than the same fellow going into a tier 1 city and working in an IT sector or any sector, electronic sector. So that is what is the now the motto of the government, or was the motto of the RGSTC, this project also when I was working under Sir for this biomedical project. That was the main motto. Now how that started and what are we doing as of now is what I'll be explaining you, but the first half will be mostly technical, and at the end you can ask questions relating to these things. Sir, how that has to be done, or how we can initiate in that direction, right? Okay. So we'll be talking about 3D virtual surgical planning and patient-specific implant, revolutionized complex oral and TMJ reconstruction. So with the 3D printing, these are the implants that are getting used nowadays. What are these, how they work, that will be understanding slowly. My PhD was on bioresorbable implants. Has nothing to do what I do actually. But how my PhD got connected to the doctors and from doctors to the market and from market to my setup is the connection that you understand. Okay, that I'll explain. So presently what we do is that we serve 4 regions like ABCD, accident, birth defect, trauma and deformity, like that. We do 29 business in 29 states, and we also export to some of the adjacent countries. And driving medical tourism to India, what I mean by that is a surgery which cost in Singapore like say 10 lakhs, cost in India only 50,000. A surgery which cost in New Zealand very high because they have insurance. You need to have good insurance. So in medical tourism in India means people are coming from different countries to India to get operated, because the surgical cost is there very, very much. So in Delhi or in Mumbai or mostly in Chennai, you will find out patients which are coming on Kerala, mostly from this side actually. So that is also one of the places where Indian startups are given preferences. This is actually the surgical workflow of our product. Like whenever we get any CT scan, we just segment the CT scan, and all the segmentation nowadays, the STL files and the 3D printing is all general nowadays. So we segment the CT scan, then we analyze it, then we print it. After the printing, we explain it to the patient that okay, this is the defect that you have in the frontal bone region, and for this, in order to cover this, you can have a titanium implant or a PEEK implant or a bioresorbable implant or a PMMA implant. Now 4 rates are given to the patient. Like your mom and dad, if they go for a lens operation, there are 2 options that every assistant of the doctor explains you. There are 2 options. So one lens is Indian and one is foreign, right? Right? So Indian lens cost around 20,000, foreign lens cost around 40,000, like, and then you take the decision. Then you think that कि foreign का है तो अच्छा ही होगा, और पैसे नहीं है तो फिर 20,000 पे आप चले जाते हो. This is what happens generally. So we also give the patient this choice कि टाइटेनियम इज 50,000, पीक इज 1 लाख रुपीज, पीएमए में बहुत गरीब है तो 15,000 रुपए, उससे भी ज्यादा गरीब है तो 5,000 का टाइटेनियम मेश भी आता है. ओके,
और बायो रिजॉर्बेबल अगर बहुत रिच कैटेगरी के लोग हैं, क्योंकि उसका इम्प्लांट एक 4 लाख का आता है. ओके, अंडरस्टैंड? हिंदी और ओके ना? सभी लोग, हाँ. So these are the options that are given by the assistant of a doctor to the patient. Then the patient decides depending on the urgency. अब माँ बाप का अगर बेटा छोटा है तो वो पैसे लगाने के लिए रेडी है, और वो अगर पढ़ाई कर रहा है तो और भी ज़्यादा दे आर इमोशनली कनेक्टेड, राइट? सीनियर लोग है या लेबर क्लास लोग है, दे जनरली डोंट अंडरस्टैंड अबाउट दीज थिंग्स, सो दे से दैट कि ओके पीएमए में लगा लो, वी डोंट हैव बजट. आयुष्मान योजना है गवर्नमेंट की, आपको पता होगा. तो आयुष्मान योजना में सर्जरी फ्री होती है, जैसे एम्स रायपुर में होती है, एम्स नागपुर में होती है, और वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है. सिर्फ इम्प्लांट कॉस्ट का पैसा देते हैं गवर्नमेंट, सॉरी सर्जरी कॉस्ट का, और इम्प्लांट आपको परचेज करना है. सो दीज आर द 4 ऑप्शंस. देन व्हेन द पेशेंट एग्रीज, देन वी प्रिंट इट, देन वी डू द फिनिशिंग एंड एवरीथिंग. ये प्रोसेस इसके अंदर होता है. हाउ द प्रिंटिंग हैपेंस इज दैट इन टाइटेनियम you have a laser of 1600 degrees Celsius, because titanium melts at 1600 degrees Celsius, you know that. But pure titanium is actually soft, like gold is very soft. So what we mix in the gold is copper we mix, right? This is like layer by layer the printing happens, and titanium gets printed in argon. So why argon prints? Argon is required because it's a inert gas. So this layer by layer formation happens. Titanium is printed in argon because titanium is also flammable. Ti6 aluminum 4 vanadium. So 90% is titanium, 6% aluminum, 4% vanadium. Titanium powder is very very flammable. That is why it is banned in India, because it is used as a solid fuel for rocket propulsion. Some of the printers are also banned in countries like Pakistan and Afghanistan, because you also can make RDX with the powder. That is why when you import it, you especially require an import license for these things. Okay. So this is about titanium. Now when you study about biomaterials, what is a biomaterial? Titanium is one of the material which is compatible with MRI. MRI is magnetic resonance imaging. तो सॉफ्ट टिश्यू का अगर डिफॉर्मिटी हुआ तो पेशेंट को एमआरआई रेफर करता है, और अगर रेफरेंस में उसने इम्प्लांट लगाया स्टेनलेस स्टील का, या कोई इम्प्योरिटी है टाइटेनियम में जो मैग्नेटिज्म है, तो वो पूरा इट विल एब्जॉर्ब दैट इम्प्लांट, और द पेशेंट कैन डाई, राइट? दैट इज व्हाई टाइटेनियम इज यूज्ड. ओके, दैट इज द रीजन. And after that you have all the finishing, you have all the supports, and you have all the grinding, and then you do all the blasting kind of work, and after blasting you do, this is how this happens, and then you do the finishing on this thing. This is all the mechanical work that is done in the industry for the making the implant. But these are some of the tools that we use to grind that, because these are tungsten carbide tools. Titanium is very hard to grind like that. And finally these are the surgical outcomes. So this is the cranial defect, and then the doctor fixes this cranial plate onto the defect. So this is titanium. Okay. Other materials apart from these are polymer material, bioresorbable materials. What are the applications that we'll see ahead? One more important thing is like congenital defects is like people who doesn't look symmetric. Symmetric means the jaw is going this direction. Congenital means by birth defect. So what they want to do is that generally these patients, they get operated at the age of 25 to 30 when they want to go for marriage. So for the marriage it's very good that you have to look little good, so that is urgency, and then they do that. So you can see in this case this midline of the patient is deviated, and then these are the surgery which is called like L04 osteotomy and genoplasty. So now with the simulation you can see how the things are changing. So can you see this thing? Can you see? So the face from here is getting converted to like this. Okay. So these surgeries are done by oral and maxillofacial surgeons. After BDS there are specialization like prosthodontist जो दांत का काम करता है, oral and maxillofacial जो सर्जरी का काम करता है, orthodontist जो ब्रेसेस का काम करता है, periodontist जो बच्चे के दांतों का काम करता है, like that. Okay. Like in MTech you have CAD CAM or thermal, like that. Also these 3D printing is also used for the guides or the implant placement. In mostly old people there are no teeth, upper lower mein there are no teeth.
और इम्प्लांट डालने के लिए भी बोन नहीं रहता है, तो जाइगोमा बोन, दिस बोन इज कॉल्ड एज द जाइगोमा बोन, देयर यू हैव टू इंसर्ट द इम्प्लांट इन 45 डिग्री एंगुलेशन, उसे जाइगोमेटिक इम्प्लांट्स बोलते हैं। और जाइगोमेटिक इम्प्लांट्स प्लेस करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि अगर वो गलत प्लेस हुआ तो इम्प्लांट आंख में भी जा सकता है। ओके, इन दैट केस ऑल्सो इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हाउ मेनी आर मैकेनिकल लैंग्वेज, ब्रांच ही बंद हो गया। They are from biomedical. Okay. So you know in jigs and fixtures you must have studied in mechanical, right? So this is just a jig that from this if I do the drilling, see this is the orbit, this is the eye of the patient. Can you see that? And such patient who don't have any teeth, such kind of guides are used. These all are 3D printed. So in 3D printing, what are the different applications, how people are using it is what I am trying to show you. Sometimes you go for radiotherapy. कैंसर में 2 टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, एक रेडियोथेरेपी होता है और एक कीमोथेरेपी होता है। कीमोथेरेपी यानी इंजेक्शंस होते हैं और रेडियोथेरेपी मतलब रेडिएशंस के थ्रू सेल्स को मारा जाता है, लेकिन उसमें अच्छे सेल्स भी मर जाते हैं। दैट इज वाई पीपल हु अंडरगो रेडियोथेरेपी, उनके बाल झड़ जाना या वो पतले हो जाना, ये सब कॉमन, राइट? सो इन दिस केस यहाँ पे स्पेसिफिक अगर रेडिएशंस इफ यू वांट टू पुट, देन सच काइंड ऑफ गाइड्स आर आल्सो फैब्रिकेटेड विद द हेल्प ऑफ 3D printing. Okay. Now, for the people, you know, undergoing the knee and the hip replacement, you know, like you have famous doctors in Nagpur like Chandak, yeah, some different doctors, Mahajan is there. So what they do is that in order to flat the knee, again we put this resection guides. These all are also 3D printed. Okay. So inside the surgery, there are a lot of soft tissues are there, blood vessels are there, arteries are there. You don't understand where the bone is. That is why a surgical approach is required by the surgeon in order to cut the bone into accurate direction. And who will provide him the surgical solution is engineers. Got? Not only that, इंसान पे जितना पैसा नहीं खर्चा कर रहा उतना वो अपने पेट पे खर्चा कर रहा है. If you know, pet are like people do lot of nowadays, not like before. So orthopedic surgeons or veterinary colleges are also using 3D printing for their surgeries. Mostly in bigger cities, people are doing a lot of expenditures on them because you have a emotional contact with your, you know, pet like that. So this is one of the case that we did. This is called. Can you tell me which is the breed? This is a Indian breed. Can you tell me which is the breed? This is the Indian breed. Name of the breed is Mudal Hound. Okay. So this was the like surgery, and you can see this plates were so again the 3D printed. These were given and the osteotomies were done and the plates were bent onto the model and then the surgery was done. So I'm just telling you in different areas how people are using it. Now we will talk about in the oral and maxillofacial complicated surgeries, TMJ reconstruction, temporomandibular joint reconstruction. Temporomandibular joint reconstruction, you can see what is the pre-op and you can see what is the post-op. A huge difference is there. A huge difference is there. Now, when we talk about in mechanical, I can give you example like you have subjects like strength of materials or vibration analysis like that. You need to go in very much in depth in sub-subjects, right? Or you can say I am solving a quadratic equation is like class 6th and 7th, and I am solving a 5th order differential equation is like very different level. So a lot of technical things also which the surgeons were doing previously are now getting digitized in these surgeries. So that is called as siliphometric analysis, how the mandible has to move forward. चिन पीछे है तो चिन को आगे कैसा करना है, जीनोप्लास्टी कैसा करना है, ये उन्होंने उनकी पढ़ाई में किया है, लेकिन आज IT engineers have converted those things into the softwares. So you can see that again, you have a, you understand the temporomandibular joint, you have a two-wheeler, you have a side mirror, right? If you rotate a side mirror, what's inside the side mirror? Ball and socket joint, right? Have you rotated a mirror? Yeah? So you have a ball and socket. Similarly, we have two ball and socket joint, left side and right side. Again, the friction should not happen, so this is made of ultra high molecular weight polyethylene, a high friction material but a biocompatible material, right?
This connected to the zygomatic arch of the patient. This is for the mandible. Again, you fix this with the help of screws. Simple. All the basic biomedical and mechanical engineering is what helps the surgeon to carry out their exact surgeries. Okay. So how this work actually, or how the surgeries happen, that we'll see how the design happens. So let's see that this is the maxilla mandible of the patient. On the right side we can see that there is no joint. So how do we plan the surgery? You fix the positional guide, you fix the guide and you cut the bone. Okay, the red bone is resected. Then you remove the guide. After removing the guide, then you keep it in the occlusion. This is the joint. The above two pieces are titanium and the inside piece is ultra high, as I told you. And this is the occlusion of the mandible. You fix the fossa component. Use 1.5 mm diameter screws over there. In the mandible you use a bigger screws, 2 mm diameter. And this is how the joint works. You understood how the things are going, right? Ultra high molecular weight polyethylene is a very good material, and that is also used in the knee surgeries and hip surgeries. Okay? Now always pay attention in the future, but how this happens, how this gets machined. It gets machined into 5-axis CNC, and we all are aware about 5-axis. So are you understanding what I'm trying to tell you? कि engineers का strength क्या है और doctors का weakness क्या है? Doctors को सिर्फ surgery आती है, लेकिन engineers को पता है कि वो बनाना कैसे. They don't understand 5-axis, 7-axis, 9-axis CNC, how to machine that. They don't understand what is a countersunk, what is tapping, what is this, in which we people are good. So you have to exploit your core area like that. So how the fossa machine is. You can see, that fossa component that was showing. This is the vertical milling of this stock. Again, you get the stock from some. In India, now the people are making this stock. You fix it, you make the program, you make the design, and then you machine it. So this is how the output has to be, like this. So you tell the people that how this, why countersunk is required, because if suppose the screw goes inside, and if you don't give a counter, you can palpate. Patient feel करेगा यहाँ पे, okay? कि यहाँ कुछ तो है, like that. Like that. Now, when we talk about orthognatic with L04 1, L04 2, L04 3, genioplasty, very complex surgeries, जो कि generally 8 hours या 9 hours का surgery होता है. For that, how the planning looks, let's see. So in this case, again you can see how the mandible is deviated. Nothing is symmetric. Again you put the positional guide, you cut this bone and the antegonial notch. Then you tell the surgeon that this is how you have to do. You cut this thing. Then you rotate the green part. See, this is rotated clockwise. How that has to be rotated with the help of splints. The splints are nothing but the jigs. Again these two splints are given for the accurate movement. Now you can see जो mandible टेढ़ा था वो थोड़ा symmetric लग रहा है. Can you see that basic? It was like this, now it is symmetric, and this is the top view. Now see, these teeth are projecting out. Here we have placed the joint. So we tell in the surgery the doctor these are the screw sizes and how they have to fix it. Bone thickness available कितना है, तो उन्हें screw कौन सा order करना है. Are you getting? These are the intra-op photos of the patient, like that, and this is the occlusion, final occlusion of the patient. These plates are placed for the accurate placements, and this is L04 1 plates also, you can see that. So complex surgeries mein how you help the surgeon. See, inside the surgery it's very, because a lot of blood is there and vessels are there, you don't understand where to cut actually. So that is why it helps there. So it reduces the surgery time from like 9 hours, so it can get back to like 7.5 hours. So around 1.5 hours of surgery time can be reduces. Reduce surgery time reduction means anesthesia time reduction, OT time reduction, bed time reduction. All the things are reduced. With that, the overall surgery cost also reduced. Okay. Now maxilla single atrophic jaw. Let's see this case study. People, older patients
All the teeth are shaking, right? All the teeth are shaking. In those cases, what we do, then we place a surgical guide and we cut the complete bone. This complete bone we resect, okay? Both are gone. Now no teeth. Then you remove this thing. Then you place the final implants. Inside these implants, can you see these abutments, these cylinders? Can you see that? Now these cylinders are the cylinders on which connections of the implants will be placed. How the connection of the implant will be placed? With the help of threading. Now what you call as a M5 ka screw, tell me what is M5 in that? What is 5? What is M5 ka screw means what? M5, M6, M8, M10. What is M5 in that? Standard क्या है? What is 5? 5 क्या है? 5 किलोमीटर है. 5 is the diameter. तो M5 is 5 mm is the diameter. तो जो भी इम्प्लांट कनेक्शंस है पूरे वर्ल्ड में वो सिर्फ 2 टाइप के. एक बनाया इजराइल ने जो आज भी डोमिनेट कर रहा है और एक बनाया है साउथ कोरिया. साउथ कोरिया का जो पूरा इम्प्लांट सिस्टम है दैट इज M1.8. 1.8 मतलब जो टैपिंग साइज है उसका वो 1.8 का है और जो इजराइल का है वो M2 का है. और बाकी सारी कंपनीज जो पूरे वर्ल्ड में उन्होंने सबका कॉपी किया है ये 2 कंट्रीज का. प्लीज अंडरस्टैंड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, व्हेन यू डेवलप द टेक्नोलॉजी फर्स्ट हाउ पीपल कॉपी इट. ओके, सो वंस हु डेवलप इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंड? For mandible cases, when you see mandible in maximum cancer cases, Nagpur is, is the hub of cancer. Why? Because in Nagpur there are maximum people who are eating tobacco. Okay, so when you have tobacco in GDC, Government Dental College, like that, you'll have maximum patients. In that, what we do, we just resect that whole part. We just resect that whole part with the guide, and then we place the abutments, and on the abutments they take the impressions, and on the impressions they fit the crown. Okay. Okay. See, this is our story only. Okay. We don't know यहाँ से कितने लोग बाहर जाके क्या करते हैं. Okay, तो ये किसी के भी साथ हो सकता है. Okay, so like that, this is placed and these 2-3 projections are there, and on the 3 projections they take the impressions in the dental lab and then they give the teeth. Okay, because biting is very important to carry out day-to-day work, right? In some cases there are 2 pieces maxilla implant. Maximum number of cases happened in COVID. You know कोविड में म्यूकर माइक्रोसिस नाम का एक डिसीज हुआ था. म्यूकर माइक्रोसिस में ऑल द मैक्सिला मैंडिबल एवरीथिंग वाज रिसेक्टेड. नाउ इन दोस केसेस फॉर दोस पेशेंट्स, दोस वर ऑल यंग पेशेंट्स. All the most of them were young patients, and that is why there was a project by state government out of which we carried out around 64 patients. There was a fund by given to 70 lakh rupees और उसमें सारे गरीब लोगों को ये मैक्सिला इम्प्लांट और मैंडिबल इम्प्लांट उन्होंने प्रोवाइड किया था जब डॉक्टर दातारकर यहाँ पे डीन थे. So in this case, full mouth rehabilitation happens in such a case. Again, you have abutments and you have all the upper and the lower denture like that. L04 one and unilateral type of osteotomy, right side. So these are the cases where I told you is the cranial cases, very simple case. Anyone can do it. If I can teach you in 5 minutes, you'll understand in the software how to make that. But for the oral and maxillofacial cases, there are very limited designers in India, very limited technology. Because when you talk with the surgeon, he should understand that he is risking his patient on your technology. क्योंकि अगर कल को पेशेंट को कुछ होता है तो आपके पास तो आएगा नहीं. He will go to the doctor. So if suppose the output is not correct, so in those cases you have to be very, very deep. So whenever, like I always tell people ki whenever they go for a startup or anything like that, it has to be very, very deep and tough. Why? The basic reason is that if it is simple, everyone tries to do it. Okay. What is the example of that? Amrutulya. I'll tell you the business model of that. Okay. Now this is a small connection system that I have told you ki how this is fitted. I told you that this is the standard implant inside the market, and what surgeon says is that if you can fix this implant into our system, then we can give the teeth to the patient. Again, there how tapping has to be used or things like that. Means marketing is something very different. Beneath that, if you go deep inside, you'll find everything very technical. And if you can solve that technical thing, marketing is like very simple. Okay, we'll come to marketing and distributorship and like that. But what inside is there is this thing actually.
Some of the people, maximum people, they go for gender surgeries. Male want to become female, females want to become male. Now what is the difference between a male and a female? Facial direction. A female has a V chin, right? V kind of a chin. Whereas a male have a box chin, right? Box chin, like the square, like this. Females have a V chin, okay? So when they go for such kind of surgeries, these implants are not titanium, they are generally PEEK implants, okay? Now you can see in this case, most of the people, you know, handsome kids or the handsome boys, if you can see heroes and all, you see their angles are very broad. If you see a Hrithik Roshan's angle, it's very broad. It's very symmetric, right? So what people want to become is that this angle, can you see? It's getting out, this one and this one. This angle should match with the zygomatic line. So people are very crazy, and these are the people who are now in the age of 35 to 40, are, you know, at a very high position in the company, and now what to do with the money? Okay. So they start doing these things. Okay. अपने लिए तो बहुत is a very tertiary, or I don't know tertiary क्या आगे like that. But most of the patients from Dubai, they are, or Arab countries, they come to the India for these kind of surgeries, and they are the exact patients what we are looking at. These are the patients who never cry about or never weep about the money. They are like कि आपको जो पैसा चाहिए मिल जाएगा, लेकिन मेरे को output ये चाहिए. Okay? And these are the patients who are very sensitive also. So when dealing with such patients or such ladies or like girls and boys, they are very sensitive. They do like 17, 18 iterations, and you know how they talk with you. When you design that, you design an angle implant, and this is what they say in the meeting. Sir, बस 0.1 इसका increase कर देना. अब 0.1 is 100 micron. 0.1 में उसको कैसे दिखाओ डिजाइन में? मैं बोलता हूँ कर दिया increase. Okay? और 0.1 increase कर दो. And I don't do anything. हाँ, no, this is the right design. Okay? And after 17 iterations, when the implant finally reaches to the OT, this patient most of the time runs away. Because he is again like, कि और 0.1 increase कर दो. So mentally these patients are like that. It's very tough to handle such patients because money is not the issue with them. And in case day before yesterday, we did one case. The lady was from Dubai, and what was her problem? She wanted a bigger forehead. This bigger forehead. Now this is the forehead, suppose like 7 centimeters. She said that I want to have 8.5. So 8.5 ke liye what we have to do? We have to place a very big implant over here, like a helmet. A big implant of 1.5 centimeter thickness from here to here. Okay. Now 1.5 centimeter implant डालने के लिए फ्लैश भी तो चाहिए ना यहाँ पे. इम्प्लांट डालने का फ्लैश को स्टिच करना है ना, तो उसने फिर ब्रेन को पीछे, स्क्रीनस नॉस्टैसिस बोलते हैं उसको, ब्रेन को बीच में से काट के 2 टुकड़े करके फैला के फिर उसके अंदर मैश डाल. सच क्रेजी पीपल आर आल्सो देयर. और अगर आप उसका फोटो देखोगे तो शी लुक सो ब्यूटीफुल. मैक्सिमम ब्यूटीफुल लोगों को और ब्यूटीफुल बनना है. आर यू गेटिंग? आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है करके, बट यू विल बी लाइक कि मैडम आप मत करो ये, अरे ब्रदर यू डू इट ना, मैं पैसा दे रही हूँ ना तेरे को, क्या आई एम एट द रिस्क. देन वी टेक सम कंसेंट फ्रॉम दोज पेशेंट्स कि इफ एनीथिंग हैपेंस इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस लाइक दैट. नाउ डॉक्टर ऑल्सो, या हाँ, क्रिनोसिसमासिस में क्या होता है ना, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका बहुत बड़ा सर होता है, मुंह छोटा सा होता है. देखा है क्या वैसे पेशेंट्स? बहुत बड़ा सर होता है, छोटे से 4 साल के बच्चे का बड़ा इतना सर. तो क्रिनोसिसमासिस दे कट द पीसेस और फिर वो ब्रेन को बंद करते हैं. दिस ऑल हैपेंस इन सर्जरीज एक्चुअली. सो दिस वाज द लाइक द केसेस दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू आर नॉट रिक्वायर्ड केसेस but are necessary cases. These are the cases which are done by the like middle class and upper class and the rich class. Middle class भी आप रहने दो, upper middle class and the rich class like that. Okay. Most of the surgeries according to my data are happening at the age of 45 when they are going for the second marriages. So in western countries, you know, जब वो second marriage करते हैं तो उनको फिर और लगता है अब तो मेरे को अच्छा ही दिखना चाहिए, तो 4 बार सर्जरी करा देते हैं like that. अच्छा, डॉक्टर भी कुछ नहीं बोलता है बिकॉज द डॉक्टर ऑल्सो वॉन्ट्स टू हैव द पेशेंट. एंड नाउ अ डेज
patients go for window shopping. Do you understand what is window shopping? What is that? Huh? Once the patient enters the surgery, doctor, the patient says to the doctor कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है because I have taken vacation for 3 days. Then the doctor says that कि हाँ मैं कल ही इम्प्लांट लगा देता हूँ, तो वो एडमिट कर लेता है पेशेंट को, ओके? उसके बाद वो हमको ऑर्डर देता है, ओके? अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि मैं उतने टाइम में बना दूँ, मेरा मशीन ख़राब हो सकता है कि मैं दिवाली की छुट्टी पे गया हूँ, थिंग्स लाइक सो वो if you draw a graph x and y axis, on the x axis you have money and y axis you have time. So you tell me according to the human aspirations कहाँ पे डॉट आएगा? Tell me. X axis is money, y axis is time. टाइम कितना चाहिए? 3 दिन. पेशेंट को कितना चाहिए? अभी के अभी चाहिए. पेशेंट को तो अभी के अभी चाहिए ना, जैसे मेरे जेब में इम्प्लांट रखा है. और पैसा क्या चाहिए? कम से कम, राइट? कम से कम पैसे में अभी के अभी इम्प्लांट चाहिए. इज व्हाट इज लाइक दैट. एग्जाम्पल्स के लिए आप ये समझ लो, आप पानी पूरी खाते हो तो आपको उतना भी टाइम नहीं है पेशेंस 2 मिनट का कि आप बोलते हो मेरा पहले दे दे मेरे को फिर जाने. दिस इज व्हाट, ये सभी के नेचर में है, बराबर? कोई दूसरा है तो आप बोलते हो अरे मेरा पपड़ी दे दे पहले मेरे को जाने दे. आई डोंट हैव दैट पेशेंस. दैट इज द सिमिलर रिफ्लेक्शन ओवर हियर. Give me my implant, I don't have time. और उसी जंक्शन में you have to perform, and that is why such risky areas में people are very very frustrated. Are you getting? जो केस के अंदर पैसा इन्वॉल्व है पर टाइम का बैरियर है, those are the things are generally risky in life. Understand? So these are the, I told you like that. These are the mostly such kind of surgeries which are, you know, see this transgender pre or post op. Can you see that? Broader chin, this V kind of chin. So male transformation to female like that, these surgeries. And these are the peak implants. Again I told you, malar ये अच्छा दिखना चाहिए. This should look like this, chin should look like this, angle should look like this, like that. Genoplasty, see there is a deficiency over here, है ना? And after the implant placement, this implant placement, the post op. This is Rahul Govi, this is Assam. Now when we talk about peak implants, how these implants are made is at a very high temperature, very very high temperature. 490 degrees में peak is getting printed. Bed temperature is 180 degrees Celsius, like that. So you can see that peak is polyether ether ketone. और इसका ही एक भाई है PEKK, polyether ketone ketone. Okay? Now polyether ether ketone has elastic modulus of bone. Bone जितना उसका elastic modulus है. That is why patients with heavy money power prefer peak implants. As I told you, titanium is 50,000. Peak is 1 lakh. The same implant is double the cost. But the raw material itself is also expensive. So एक पाव peak आता है 2 लाख रुपए का. तो आधा किलो कितना हो गया? 4 लाख रुपए. So material which costs around 8 lakh rupees a kg, उसका implant महंगा रहेगा. The material comes from where? अगेन द वेस्ट. तो अगर मटेरियल इंडिया में बनना शुरू हो जाए तो इंडिया का जो इम्प्लांट कॉस्ट है और जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो कम हो जाए. आई एम टेलिंग, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग कि हम लोग कहाँ पीछे है? हम लोग बना तो लेते लेकिन टेक्नोलॉजी हम नहीं बना पा रहे लाइक दैट. नाउ दिस लास्ट 2 स्लाइड्स आर देयर कि आई विल टेल यू द होल एप्लीकेशन लाइक दैट. सो व्हेन आई वाज वर्किंग अंडर सर, दिस वाज माय फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल. That was in the Betic lab. We were working on this hydroxyapatite and tricalcium phosphate scaffolds, and we were not knowing anything. Like I was not knowing anything, and there was a partner hospital, Datta Meghaleshwar Medical Sciences in Wardha. So there I met some of the surgeons, and then what I did is that I just requested one madam to put this implant inside this called root cone cavities. So उनका जो ethical committee था वो DCGI से approved है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. सो उन्होंने मेरे कुछ एनिमल ट्रायल्स के बेसिस पे मुझे 8 पेशेंट्स की परमिशन दी थी उस टाइम. नाउ सी दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज वेरी क्रेजी अबाउट दैट आई विल बी द ओनली स्टूडेंट. एज आई टोल्ड यू ना, three projects were there. I think COEP and IIT Bombay and VNIT. IIT Bombay was working on class 1 devices, so they were working on stethoscope or and class 2 was this thing, Pune. So he made a bandage.
And Kute sir take the biggest risk, सीधा class 4. Class 4 is implants which are inside the body and will remain inside the body. However, we both were not knowing anything about tissue engineering. So then but we started, like he told me, 2020, start reading paper from 2010. So that time we are not knowing anything, कि क्या होता है implant, scaffold or anything like that. But he was very crazy about कि we'll work on class 4 technology. So 5 years down the plan we'll be making organs and like that. However, those bigger institutes, IIT Bombay के पास पैसा भी ज़्यादा था and intellectual power भी उनका ज़्यादा था. But they started on class 1. So then we started on tissue engineering. I made these scaffolds in my 4th year. And मैंने वो कुछ scaffolds कुछ patients में डाल दिए थे. हालांकि ये scaffold से patients को कुछ फ़ायदा हुआ नहीं और ना ही उसका bone बना. So it was actually a failure. लेकिन डॉक्टर्स के मैं कुछ कनेक्शंस में आ गया था, अंडरस्टूड. एंड देन वन डॉक्टर सेड दैट कि यार ये तो नहीं चल रहा है प्रणव, कैन यू मेक अ पीक इम्प्लांट. सो देन मी एंड माय पार्टनर वी सर्च्ड ऑन कंपनी फ्रॉम चाइना एंड देन वी स्टार्टेड मेकिंग पीक इम्प्लांट्स. और देन आई स्टार्टेड पुटिंग दोज इम्प्लांट्स इन द पेशेंट. देन वी केम टू नो दैट देयर आर रेगुलेटरी इशूज ऑल्सो लाइक दैट. यानी गाड़ी चलाना तो सीख लिया लेकिन इसके लाइसेंस लगता है ये पता ही नहीं था. ओके, सो स्टार्टअप जर्नी. पीपल लाइक अस हु आर मिडिल क्लास, जिनके जो माँ बाप है वो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जिनको कुछ पता नहीं है और अपने बच्चों को बता भी नहीं पाते कि क्या करना है. लेकिन मारवाड़ीज फैमिलीज दे अंडरस्टैंड कि दे टेल देयर स्टूडेंट्स कि दिस हाउ यू हैव टू डू. वी आर लाइक यू अंडरस्टैंड इट. So however, that was the area where I started this thing. Though it was not a successful, but all the doctors came into my contact and I understood their ambience. Understood means we understand what is their temperament, how they think about the things, how they are crazy about the things, about the money and the time and things like that. That you came across, and then you know that what is the gap, and then you interject. हालांकि products तो मैं bioresorbable के अभी बेच रहा हूँ, लेकिन business तो मैं उसका करता ही नहीं हूँ. Okay. So after that, you can see this was the recent case study that I did in Gandhidham. Gandhidham is a place in Gujarat. Okay. So in Gandhidham, this was the first implant that is placed and is a bigger size bioresorbable implant. It's a PLGA implant which resorbs in 2 years of time. Now there is no country in India which manufactures such implant. It comes from Singapore, and one more is KLS Martin, which is in Germany, and one more company is Johnson Johnson. Okay. So I was working on the PhD on this product, and finally I made this implant. जो कि it happened after 4-5 years. But whatever research that we were doing is now having the market. So this surgery is very, very interesting. You see this surgery. This we are launching in the month of December also. This is the patient position. A 11-year-old patient. So this is, I operated this case like I was just assisting them. You can see we placed the hydroxyapatite and the plates were placed. Now protein is required inside the body. Okay? So we have taken the protein from the pelvis. This is called bone marrow aspirate. So once they gave the protein, I handed the protein in my hand and I started injecting the protein onto the scaffold. So I taken care of everything because I don't want it to be. अभी जो pores होता है इसके अंदर this is gone continuously, okay? And then the doctor is finally screwing these things, okay? So now this is the bone and this is the PLGA, polylacticoglycolic acid. In 2 years of time, this complete flap should regrow, or around 80% of the bone should form inside that. Okay. So this was the whole journey trying to tell you is that कि research हम लोग कौन सा करते हैं, फिर कैसे लोगों के contact में आते हैं. But you always have that aim that I'll be launching this thing first in India. So that time we did one patent which was granted also. And in the video it was like that. So the architectures that were made was like 0, 90, 45 were the key to that. And now the validation is given by again the West key when they launch such kind of implants, and then you know that okay, I was working on the same thing.
I think I am on the right path. I should be the first one to do that. अब there are two things. I'll ask you this question also. सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी लाता है उसके लिए आसान है या जो फॉलो करता है उसके लिए आसान है? जो फॉलो करता है उसके लिए? You got the question what I am saying? You got the question? क्या बोल रहा हूँ मैं? Who किसके लिए सिंपल है लाइफ? सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी लाता है या टेक्नोलॉजी आने के बाद जो फॉलो करता है? जो लाता है उसे कंपटीशन कम है एंड एंड दिस साइड आप लोग बोलो कुछ मुंह से अपने. जो फॉलो करना है तो उसे पता है कि रेगुलेशन क्या फॉलो करना है. ओके सो जो लाता है ना टेक्नोलॉजी उसे ना तो रेगुलेशन के बारे में पता है ना तो उसको कंपटीशन के बारे में पता है और ना ही आपने क्या बोला हाउ द टेक्नोलॉजी वर्क्स ये भी नहीं पता है. उसे पता कुछ नहीं होता है. उससे सिर्फ उसका 10% पता होता है. 90% मार्केट ही उसको बता देता है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मीन्स व्हेन आई मेड दिस द सर्जन टोल्ड मी इसमें बीएमपी डालना पड़ता है. सो आई आस्क्ड हिम हाउ मच बीएमपी फॉर द किड्स 20 सीसी फॉर द अडल्ट्स 40 सीसी. वही मैंने अपने ब्रोचर में लिख के रखा है. अंडरस्टूड? देन फिर वंस यू डू दैट सर्जरी यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट एंड देन यू मेक योर प्रोटोकॉल. तो जो इनिशियल लाता है उसको रिस्क तो बहुत ज़्यादा है लेकिन एडवांटेजेस भी उसके लिए बहुत ज़्यादा है. और ऐसा लगता है सबको कि इसने बहुत बड़ा तीर मारा है पर वो तीर उस कद्दू में मारता है. अंडरस्टैंड? सो ऑलवेज व्हेन यू स्टार्ट एनीथिंग इनिशियली इफ सपोज यू आर वर्किंग इफ द वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन PLGA आप PLG के भाई से स्टार्ट करो PLLA DLPLLA उसके ज़्यादा रिजल्ट्स में वेरिएशन नहीं है बट यू हैव योर वन प्रोडक्ट एज आउट. So though it fails, you understand how to correct it, which is important. There is not necessary always कि उनका पूरा replica आपको करना है. Because even if you replicate anything, you cannot be exact. Means if suppose madam tells my wife how to make a poha on a phone call. If suppose her poha taste X on a phone call, my wife makes the same poha. क्या उसका भी पोहा X टेस्ट करेगा क्या? करेगा या नहीं करेगा? हाँ पोहे का एग्जांपल तो समझ रहे हो ना. नहीं करेगा. और जो डिफरेंस है ना इनके एक्स पोहा में और मेरे वाइफ के एक्स के पोहा में उसे ही रिसर्च कहते हैं. बिकॉज एवरीथिंग इज इरिवर्सिबल. इफ यू ड्रॉ वन हैंड लाइक दिस सी आई एम ड्रॉइंग एंड लाइक दिस आपको लगता है मैंने सेम पाथ ट्रेस किया? क्यों नहीं किया? इज द पॉइंट ऑफ रिसर्च. सो व्हेन यू डू द सेम थिंग यू विल गेट डिफरेंट रिजल्ट्स. And when you discuss the results becomes a chapter of your paper which is called as result and discussion. You got it what I am trying to say? So the same thing अगर आपने किया तो it becomes a product. When you install the product in a very crucial fashion into the application you understand how to bring it into the market. But the initial journey has to be very fast. To make it fast, most of the students what they do is that कि एक बार अपना engineering हो गया, immediately go for MBA and things like that. But the problem with that is when you take such decisions, you expect the same output because you are giving the same input, like the rest of the million people are doing. भाई आप इंजीनियरिंग के बाद MBA करोगे और फिर जॉब पे लगोगे तो आपका स्टार्टअप का सपना तो सपना ही रह जाएगा ना, राइट? तो आपको उसी टाइम पे उसका रिस्क लेना है when the age is correct and things. If you want to go, I am saying, because जो कंट्री में 150 करोड़ पॉपुलेशन है वहाँ की रिक्वायरमेंट भी उतनी ज़्यादा है तो ये आपकी बहुत कंपल्सिव ड्यूटी भी है कि आप लाइफ में विच इज़ कॉल्ड एज विजडम इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज दैट यू कैन ओनली अप्लाई इन बिजनेस. जॉब में आप कोई भी पोजीशन पर हो किसी ना किसी के अंडर ही होता है. तो इवन इफ यू हैव अ ग्रेट आइडिया यू कैन नॉट एक्सप्लॉइटेड. तो इसलिए व्हाट आई थिंक इज दैट कि मरने के पहले आपने एक बार लाइफ में ज़रूर बिजनेस करना चाहिए और जैसे आप फेल हो जाओ फिर तो आप जॉब कर ही सकते. ओके लेकिन मरने के पहले आप बोलोगे कि मैंने बिजनेस किया है. तो दैट इज़ द पॉइंट. यानी ये पॉइंट था. बाकी तो टेक्निकल चीज़ें हैं. दीज आर माई 2 plants. दिस इज माई रिसेंट प्लांट एट उमरे MITC. दिस इज वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम एंड नाउ वी हैव जम्प फ्रॉम हियर टू हियर. तो दिस इज माई फ्रॉम माई साइड. इफ यू हैव एनी बेसिक क्वेश्चंस कोई भी हो
out of the topic, out of the subject, you can ask me. Okay, I am happy to answer anything you can ask. Use this mic. What I will use? We are supposed to use this mic hand, not. Yeah. सो आपका बैकग्राउंड क्या था सर एंड आपने कहाँ से स्टार्ट किया? Background is mechanical engineering. I did my engineering from COEP. COEP, you know, one college is there in Pune, and after that I did my MTech, PhD, and postdoctorate in under Kute Sarun. Like that. सो आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये नहीं आता, मतलब करिकुलम में तो नहीं आता ना. Mm-hmm. सो हाउ मच टाइम इट टुक टू लर्न ऑल दिस लाइक बायोमटेरियल्स एंड ऑल ऑर्गन डिजाइन? हाँ, so it's a long gestation period. See, इसको आप मूवी के एग्जाम्पल से समझो. पहले मूवी में एक वो था, हीरो रहता था और एक कॉमेडियन भी रहता था. लेकिन अक्षय कुमार की मूवी में कॉमेडी की जरूरत नहीं रहती, वही करता है. तो आपको सारी फील्ड्स का पता रहना चाहिए. यू कैन नॉट बी लाइक कि ये तो मेरा काम नहीं है, ये मैं नहीं करूँगा, ये तो मेरे को पढ़ाया नहीं है. वो आपको सारे एरिया का थोड़ा थोड़ा पता रहना चाहिए. एक म्यूजिक डायरेक्टर जो होता है ना, उसको सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाना नहीं आता है, लेकिन उसको ये पता रहता है कि किससे कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाना है. मैं राइट कर रहा हूँ? क्या डायरेक्टर कभी एक्टिंग करता है क्या? लेकिन वो बताते हीरो को एक्टिंग करना कैसे, लेकिन वो खुद नहीं कर सकता. तो आपको सारे एरिया का नॉलेज पता रहना चाहिए. अगर नहीं है तो वैसे आपके पास लोग रहना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ये नहीं बोल सकते हो ना कस्टमर कि मुझे नहीं आता. मतलब कम ऑन, यू कैन नॉट से दिस थिंग टू ना दैट एनीवे. आपको कोई भी चीज़ है, यू हैव टू नो अबाउट इट. सो बायो मटेरियल के लिए NPTEL के लेक्चर्स है या बुक्स है दैट यू हैव टू रीड. रिसर्च पेपर दैट यू हैव टू रीड. उसके लिए तो देयर इज नो शॉर्टकट. मतलब ये तो करना ही, करस लगन तुम्हारा. यस सर. Sir, for the designing purpose, what are the softwares are you are using for these designs? This is done in like Freeform is one of the software, and Mimix is there, Thematic is there, Dassault system also softwares are there, D2P is there. Softwares are different. Software का पैसा नहीं दे रहा है आपको डॉक्टर. डॉक्टर आपको किसका दे रहा है पैसा? डिजाइन का. लेकिन डिजाइन का भी पैसा दे रहा है क्या डॉक्टर? डिजाइन होनी कैसे चाहिए ये आप जब डॉक्टर को बताते हो, उसका वो देता है. Are you getting what I am saying? So you don't sell the design to the doctor, you sell the solution to the doctor. है ना, जिसका पैसा पेशेंट है. कि अगर आप मुझसे डिजाइन कराओगे तो ही आप ऐसा दिख पाओगे. एंड देन ही इज लाइक कि ओके, फिर इसी से मैंने इम्प्लांट बनाने चाहिए, बिकॉज ही अंडरस्टैंड अबाउट दैट. एंड फॉर द अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू रीड ऑल दोज थिंग्स. या डॉक्टर से साथ बैठ बैठ के जैसे मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ, तो आई नो अबाउट, लेकिन आई डोंट नो अबाउट ऑर्थोपेडिक्स. वैसे तो ऑर्थोपेडिक्स में आई डोंट नो एनीथिंग, बट OMF में आई नो, बिकॉज मैं इतने सालों से कर रहा हूँ. तो वो लंबा जर्नी है काफ़ी. इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बट इट्स अ टेक्निकल जर्नी. ऐसा नहीं है कि ये हो जाता है ना. मतलब वो चीज़ें ईजी रहेगी ना. तो इंडिया में कैसा है कि इफ़ समवन इज डूइंग एक्स थिंग, तो 10 डिफरेंट पीपल जो सट से कॉपी मारते हैं. वो एग्जाम्पल आपको मैं अमृतुल्य का बताऊंगा अभी. आज द क्वेश्चन आई टेल यू देयर बिजनेस मॉडल, और वो क्यों इतना वो नहीं हो पाया, मतलब प्लॉरिफरेट नहीं हो पाया. यस. Sir, for us biomedical engineering students, what are the things you should tell us to do? So what are the aspects we should focus on more as for the upcoming future and all the surgical and implant stuff, or maybe some device? See, device and all is that ki now you're in biomedical, so you understand a mix about mechanical engineering and medical. So you understand about the maxilla, mandible, and these basic anatomies you understand inside the body. So that will help you. But having that exact product which is the requirement of the market is that when you reach to the market. So when you reach to the market is mostly like कि अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो बिजनेस लोगों ने किया है वो सेल्स वालों ने किया है, क्योंकि सेल्स वाला ही पर्सन मार्केट के कनेक्शन में रहता है. राइट? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अगर मैं इम्प्लांट बना रहा हूँ और आप मेरे सेल्स पर्सन, तो आप डॉक्टर से जाके मिल रहे हो. अब 2 दिन बाद मैंने आपकी सैलरी हाइक नहीं किया, तो आप क्या करोगे डॉक्टर को? अरे मैं इससे भी सस्ते में देता हूँ, इससे लेके आप दे दो. यू नो डॉक्टर की
रिक्वायरमेंट क्या है, ओनली मैन्युफैक्चरिंग यू डोंट नो, वो सीखा जाए। तो वंस पीपल हु आर आउटसाइड और टचिंग द मार्केट ना, दे अंडरस्टैंड। फिर डॉक्टर बताता है यार क्रेनियल के साथ सूचर क्यों नहीं बेच रहे हैं, हाँ सर मैं बेचता हूँ ना, अरे यार इसके साथ वो टाइटेनियम का सर्वाइकल स्पाइनल केज भी दे देना, हाँ मैं वो भी देता हूँ। पीपल हु आर कनेक्टेड ना मार्केट से, उनको इनपुट्स मिलते रहते हैं। पर अगर आप यहाँ बैठे हो, देखो पीएचडी वाला एकमात्र वो बंदा रहना चाहिए जिसने बिजनेस करना चाहिए, लेकिन वो सारी चीजें छोड़ के दूसरा काम करता है। और जो बैक बेंचर्स है वो आप देखोगे, बैक बेंचर का कैसा होता है पता है कि आपको, उसको ऐसा लगता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में, समझ गए बैक बेंचर की स्टोरी। इसलिए उससे लगता है कि चलो कर लेते हैं, और वो सक्सेसफुल हो जाता है। वेयर एज द इंटेलेक्चुअल पीपल जो है वो डर जाते हैं इस रिस्क लेने से, और बैक बेंचर तो वैसे ही पूरा, उसका तो कोई करियर ही नहीं है। तो जो लोग सब कुछ हार के बैठे हो तो रिस्क कैसे ले सकते हैं। तो यू सी ऑल द ट्रक ड्राइवर्स वगैरह के जेसीबी जो लोग चलाते हैं ना, उनके जो मालिक है उनको कुछ नहीं समझता है, बट दे अंडरस्टैंड दैट द मार्केट में जो लोग हैं, आप लोग अगर सर्जरीज अटेंड करोगे, डॉक्टर्स के पास जाओगे और उनसे मिलोगे तो आपको समझेगा। अब आप बोलोगे डॉक्टर्स मेरे को मिलाता नहीं है, वो नहीं करना, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी जो कि ये नहीं कर रहा है, देन यू विल बी एबल टू डू इट। या वो नहीं कर रहा है जो भी एक्सपायर है, मीन्स हाउ डू यू क्रैक इट इज योर मतलब मसाला काइंड ऑफ ऐसा। वो लास्ट में को पूछने दो, हाँ ऐसे पूछ लेता, लंबा तो है नहीं रूम। How do you approach doctors like when you first meet your lab? How do you approach doctor like doctor will be like ये तो already market में available है, so why I should use your implant? हाँ, तो देयर इज अ की टू दैट, व्हाट यू कैन डू। मार्केट में अवेलेबल है ना, लेकिन हर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं उससे अच्छा है। जनरली व्हाट हैपेंस इज दैट कि व्हेन यू मीट सच डॉक्टर्स, देयर आर पीपल हु आर वेरी वेरी कमर्शियल, जिनके पास टाइम नहीं होगा, बट देयर आर ऑल्सो डॉक्टर्स जिनके पास दुनिया भरे का टाइम है, ठीक है, एंड दे आर लाइक कि ठीक है इफ यू वांट टू कम ना, आई विल टेल यू आइडिया अबाउट एनीथिंग। फिर वो अपनी डिजाइन बनाएंगे, फिर आप उसको बनाओ, उसको मिलाओ, फिर वो अपने दोस्त से मिलाएगा, ऐसे नेटवर्किंग बढ़ेगा। क्योंकि इनिशियली आपको इतना आता तो है नहीं कि आप डॉक्टर को सिखा सको, तो आपको ऐसा पकड़ना पड़ेगा आदमी जिसका टाइम है लेकिन जिसका कोई सुनना नहीं चाहता, और आप ही उसका सुन रहे हो, बट यू विल फाइंड अ वे। ऐसा नहीं कि सभी लोग एक जैसे हैं, कि सर मेरे को कोई प्रोजेक्ट करना है, या मैं इस चीज़ पे काम कर रही हूँ, मेरे को नया सिरिंज ही बनाना है, नई सलाइन बनाना है, सर मेरे को ग्लव्स ही बनाना है, कंज्यूमेबल आइटम है। ग्लव्स का सबसे बड़ा मार्केट है, कंज्यूमर कॉटन का सबसे बड़ा मार्केट है। दिस ये है ना, स्क्रब करते हैं डॉक्टर्स लोग सर्जरी के, बहुत बड़ा मार्केट है उसका। तो आप वैसा भी लिक्विड बना सकते हो एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट, बराबर ना। केमिस्ट्री स्टूडेंट को जरूरी थोड़ी है कि बस पानी में नमक घोल के दिखाना है बच्चों को, वो ही कैन मेक दैट ना, ही कैन मेक दैट केमिकल, और फिर उसको आप अप्रूव करके, मतलब इफ यू हैव दैट आइडिया और आप उसको भागते रहोगे ना, तो आपको मिलते हैं लोग। ऐसा नहीं है, जनरली क्या होता है लोग जाते नहीं, दे आर लाइक कि मैं क्यों जाऊँ, वो आएगा मेरे पास। वो अप्रोच आपको, मतलब वो क्या है, ईगो, वो आपका जो पूरा वो सब छोड़ के घर के बाहर निकलना पड़ता है बिल्कुल। लाइक दैट। तो दीज क्वालिटीज इफ यू हैव, दैट इज व्हाई ना कि बहुत कम लोग बिजनेस करते हैं। क्या क्यों रीजन, यही रीजन है ना। इंटेलेक्चुअल लेवल का जरूरत इसमें उतना नहीं रहता जितना सोशल लेवल का है। हाँ, so that's a very important question कि how much role you played. No, I'm not playing any role at this moment. And what how to maintain a relation, how to maintain a relationship between mentor and mentee. Like you said, the sir were like approaching the class for, so as a young student we are like यार एक ऐसा मतलब कैसे होगा, and we have to just follow the mentor in that. So how to maintain that relationship between the mentor and mentee? See, what role he has played, I'll tell you. And relation he only maintains. Generally what happens, एक जो PhD का जो प्रोफेसर होता है और उसका स्टूडेंट होता है, वो ऐसा रिलेशन रहता है कि जो प्रोफेसर कर रहा है वो चाहता है उसका स्टूडेंट उसको हर एक चीज़ अपडेट करे और वैसा ही बताते रहे, राइट। बट वो पूरी तरह करेक्ट अप्रोच नहीं है। सर का अप्रोच वैसा कभी था नहीं। सर का अप्रोच बहुत फ्री अप्रोच था कि जो करना है वो करो। इट्स नॉट लाइक ये मत करो या वैसा मत करो, या मेरे को पेपर में फिर आपने
पहले मेरा रहेगा, पहले मैं चेक करूँगा, फिर ही पेपर सबमिट करना, लाइक दैट। तो वो रेस्ट्रिक्शंस की वजह से व्हाट हैपेंस, यू लिमिट योरसेल्फ टू द पीएचडी ओनली, कि भाई पेपर ही करना है, और कब जान छूटे ऐसे प्रोफेसर से, ऐसा आपको लगेगा। बट सर के केस में बहुत फ्री टाइम रहता था कि जो भी टेस्ट करना है वो करो, अपने लेवल पे करो। आई एम सपोर्टिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल एंड। आपके बाद पीएचडी के बारे में आपसे ज़्यादा कोई और जानता भी नहीं, ओके। तो आपको जैसा चाहिए वैसा उसके अंदर लो, एनिमल स्टडीज करना है जो करो वो करो। एंड व्हेन आई वाज डूइंग माय दिस थिंग ना, जो मेरा पीएचडी हो गया था, इट वाज ईयर 2018, उसी टाइम शायद कोविड एंड ऑल वर स्टार्टेड। सो सर लाइक कॉलेजेस वर क्लोज्ड एंड ऑल द बिजनेस इन इंडिया वाज क्लोज्ड। So sir was one who was like convincing the director कि you know Pranav is doing a lot of work, इसका extend करते रहो। So I got the salary 1 year of sitting in the house. So that was a huge support. हालांकि passively मैं startup पे काम कर रहा था। तो ये भी आपको समय लगेगा, इसलिए जब आप कोई जॉब करोगे तो इमीडिएटली लोन मत ले लेना कोई। जनरली लोग क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं और यू गॉट स्टक अप विद दीस थिंग्स ना। अब आपको महीने के 40,000 किसी को देना ही है बैंक, तो आप नहीं अपना कुछ कर पाओगे ना जीवन में, तो ये सब रिस्क नहीं लेना। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आपके पास पैसिव टाइम रहना चाहिए ना इटरेशंस करने के लिए, है ना। नौकरी में 30 दिन बाद सैलरी आती है, धंधे में 1 साल तक नहीं आई तो क्या करूँगा। इसलिए आपको रिस्क फ्री रहना है। मोदी जी जैसे, ना शादी है, ना बच्चे हैं, ना कुछ भी नहीं है, ऐसे घूमने के लिए बाहर, तो यू कैन टेक द रिस्क। That's really very interesting. I think you can talk to Pranav maybe for the whole day, and then you will something get from his rather experience. So Pranav, thanks a lot for a very nice, rather the lecture, I should say. I don't know what I should say. That he shows with some examples. That's an interesting thing. Like this is what. अमृतुल्य एग्जांपल एक बता देता हूँ, वेरी गुड। मैंने उसके लिए बहुत आई विजिटेड सो। अमृतुल्य के कॉम्पिटिटर कौन कौन है बताओ मुझे। चाय तो सभी पीते हैं, हाँ, LOC और ये और डॉली तो ठीक है। आपको पता है कि अमृतुल्य का बिझनेस मॉडेल कसा आहे? मी त्यांना विचारलं। अमृतुल्य स्टार्ट में बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था, पर क्या हर जगह भी अमृतुल्य है क्या? है क्या? बहुत जगह। क्या उसका फ्रेंचाइजी मिलना बहुत मुश्किल है क्या? नहीं, सिंपल है। अमृतुल्य का बिजनेस मॉडल बताता मैं आपको। आई आस्क्ड देम, उनका कैन रहता है ये कितना बड़ा, ठीक है, उसके अंदर उनको डालना पड़ता है। अमृतुल्य का क्या कहना है कि अगर आप बेचोगे चाय तो मेरा 120 रुपए का पैकेट इसमें डालना, मिक्स, दैट इज कॉल्ड एज प्री मिक्स। उसके साथ वो डालता है फुल क्रीम मदर डेयरी का 4 लीटर का दूध। 1 लीटर मदर डेयरी का दूध कितने का आता है? फुल क्रीम 65 रुपए का आता है, ठीक है। आप कैलकुलेट करो तो ये फटाफट 65 इंटू 4 कितना हो गया? 260। उसके बाद 150 रुपए का प्री मिक्स, 410। उसके बाद उसको ट्रैवल करना है, डिस्पोजेबल, और उसका लाइट और गैस भी उसमें जल रहा है, तो टोटल समझ लेते अपने को उसको 500 550 रुपए लगता होगा। इसमें कितनी चाय बनाता है? हाँ? 4 लीटर तो दूध में कहां से 10 लीटर चाय बने? पानी वो थोड़ा सा डालते हो तो मिक्स करना, लेकिन अमृतुल्य ने नहीं बोला है कि आपको डालना है उनके, ठीक है। अब उसको क्या होता है, वो बेचता कितने में 1 कप? 10 रुपए में। अब उसमें अगर मान लो एक इसमें बनते कितने? 200 कप, क्या बोलते हैं, 200 कप्स एक इसमें बनते हैं, ठीक है। एक 200 कप्स बनाने के लिए उसको 2 प्रीमिक्स और 2 बार ये यूज करना पड़ता है ना। 8 लीटर की चाय में उसको करीबन 200 कप मिलता है, तो 200 कप बेचा कितने में उसने? 2000 में। इन्वेस्टमेंट कितना लगाया उसने? 550। तो एक इसका है ना, तो डबल वो डाला ना, 1000, 1100 रुपए, 1200 रुपए उसको लग गया, तो उसका प्रॉफिट कितना आया? 800 रुपए। अब जो आदमी एक दिन में 200 कप बेच सकता है, जरूरी है कि रोज 200 कप बेचेगा, तो दिन में कितना कमा रहा है? 800 रुपए। अगर 400 कप बेच दिया उसने, 500 कप बेच दिया, तो उसने 2000 रुपए का प्रॉफिट लेके गया घर पे। अगर एवरेज उसका निकाला जाए तो दिन के 1000 रुपए कमा रहा है वो, या 800 रुपए कमा रहा है।
इसका मतलब महीने के वो 25,000 रुपये कमा रहे हैं, तो उससे ज़्यादा तो ओला वाला कमा लेता है। इसलिए वो मॉडल इतना ज़्यादा चला नहीं, क्योंकि उन्होंने मार्जिन बहुत कम रखी। और दूसरी बात आप ये देखोगे, उसकी फ्रेंचाइजी मिलती 40,000 रुपये की, तो हर किसी ने वो खोल दिया था उस टाइम पे, हर जगह ये वाले क्या चालू था, वो सब था। बट इट डज नॉट ग्रो अप बिकॉज इट वॉज सिंपल। द ओनली थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट इफ द थिंग्स आर सिंपल ना, तो 10 लोग उसको करने के लिए देखते हैं। ये बात है। तो इसलिए इट ऑलवेज हैज टू बी इज लाइक कि वेरी वेरी टफ एंड डीप, सो दैट 90% पॉपुलेशन ऐसी कट जाए। ओके यार ये तो बहुत मुश्किल है, छोटो इससे अच्छा था अमृतुल्य का ही डाल देते। देन यू हैव द मोनोपॉली। सो एज अ स्टूडेंट आपको ये फोकस करना चाहिए कि मैं जो भी करूँ बहुत हार्ड होना चाहिए, वो समझ में नहीं आना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो जब समझ में आ जाता है लोग उसकी वैल्यू। So thank you, Pranav, for a very nice advice even at the end. And what actually I learned that what you said, the start early, don't be late if at all you want to enter into this domain. And what you said is that you have to be very skillful person if at all you want to enter into the startup. Not a very thing very simple. And it happens like what you said that most of the startups, that's what they've been already told, like most of the startups are in the domain of food or services to be offered, and therefore they are hardly valuable as far as the Indian startup ecosystem is concerned. But if such type of the startups are there, a lot of skill in developing the implant customizations and all that, I think that's what exactly we do want. So we must appreciate the presentation by Dr. Pranav. So please join me in appreciation for that. Thank you, Pranav. It is nice to see you. And as a token of love, I should say, we are offering you this particular memento. So you can keep it. चेंज हो गया क्या? Yeah, change हो गया आपके। So whenever there is a change, I think you should have it in your Yeah, definitely. I came for this only actually. Okay. That's nice, that's nice. So, Pranav is available. Anytime you can just yeah, yes. So now, oh yeah, and to keep that, this is the bag. Wherein we have mentioned like natural foods and all that. Yeah, thank you. So I think should we have a break for 5 minutes and